Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a lesson which is in your syllabus, that is a short story, The Necklace. First of all, I will advise you, my students, to open your book and take a pen and a copy in your hand and take down the notes, the word meanings which will come in the lesson. So far as the short story is concerned, we have done the prose almost most of the poems. Now coming on the one of the most important genres of English, that is short story. In उर्दू में इसको अफसाना कहते हैं. तो what is a short story? I will tell you in brief. A short story is a piece of prose also. It is a fiction and it has limited characters. It can be read in one sitting and it has a limited number of words, and we read it for enjoyment, and it reflects the issues of the society, or we can say it is the reflection of the life. ये जिंदगी की तस्वीर कशी कर रही है. And there is also use of symbols. We can get maximum out of minimum. So far as The Necklace short story is concerned, it is written by a French writer, Guy de Maupassant. What he is putting in this very lesson, he is through this necklace, he wants us to show the norms of the society, of the French society. जैसा हमने देखा है हमारी उर्दू में प्रेमचंद ने, कृष्णचंद ने, उन्होंने भी कुछ अफसाने लिखे, तो उनमें उसके हिंदुस्तान की जो ज़िंदगी है, हिंदुस्तान की सोसाइटी में, समाज में जो ज़िंदगी है, उसके मुतालिक हमने उस पर बहुत से मौज़ूआत पे उन्होंने कलम उठाया. तो so far as the necklace is concerned, the necklace is the symbol of richness. This is the symbol of materialism. तो इस नेकलेस में एक लड़की की कहानी होती है, उसका नाम है मैटिल्डा. And she is the main character here. And there is one more character, that is her friend, Madame Loisel, Madame Forrester. Madame Forrester, she is her friend. So what is in this very, and there is one more character, that is her husband, Loisel, her husband. This Matilda happens to be an unhappy girl because she was living a poor life. वो गरीब लड़की थी, वो गरीबी की जिंदगी गुजार रही थी, and she has big dreams but no means to realize those dreams, which is the cause of her unhappiness. Matilda is invited to a grand party. Then she had no beautiful dress. She had no jewelries to wear there. So what she did, she borrows a necklace from her friend, from her classmate, Madame Forrester. And what happens later? She loses that necklace in the party, and that creates the trouble for her throughout the life. So there is a lesson for we people, that she borrowed the necklace from her friend and she
and she loses it. So we found that she was not content with the life. वो जिंदगी से सहमत नहीं थी. अल्लाह ने जो उसको दिया था वो उस पर खुश नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा नाखुश रही. So for going to the text, what we will read here. So she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known. She loved and married by a man, either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of Board of Education. She was simple, but she was unhappy. She, who is she? She is here Matilda. She was one of the most prettiest girls. And she was as if she thinks that as if she was an error of destiny. वो अपने आप को किस्मत की वो अपने जन्म को अपना बदकिस्मती समझती थी. She was born in a family of clerks in the middle class family. She has no dowry. She has no means of becoming known. वो मशहूर बनना चाहती थी लेकिन उसके लिए ज़राया नहीं थे. So she loved a man who was not so rich, or he was a clerk, a middle class person. Here petty means, here's a word petty. Petty means small. So she married a petty clerk because she has no dowry. The clerk was working in the Board of Education. So Matilda was simple, but she was unhappy. She suffered insistently, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered insistently. Insistently means continuously. Insistently means continuously. And herself born for all delicacies and luxuries. She was striving for the fineness and the richness. She suffered from the poverty of her apartments, the shabbily walls and the worn chair. वो हमेशा अपने घर जो apartment means here a flat, her house. वो इनसे बहुत ही नाखुश थी क्योंकि she was suffered from the shabbily walls and the worn chair. There was the shabbily means the dirty walls and the worn chair, old used chairs, used furniture. All those things tortured and angered her. तो वो चीज़ें इसको बहुत ही तकलीफ दे रही थी क्योंकि उसके घर में इस अयाशी के सामान नहीं थे. When she seated herself for the dinner opposite to her husband, who uncovered the tureen with a delighted ear, saying, "Oh, the good pot pie, I know nothing better than that." So, जैसा कि एक दफ़ा उसके शवहर ने उसके सामने एक डिश लाई, तो उसने कहा, हाँ मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है. She would think of the elegant dinners for shivering silver, and she thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. वो ख्वाब देख रही थी किस चीज की? of the graceful dishes, silver dishes and lovely food. वो ये ख्वाब देख रही थी कि हमारे घर में भी ऐसा खाना हो. She had never frocks. She had neither frocks nor jewels, nothing. उसके पास न कपड़े पहनने के लिए थे, and she loved only those things what she had. So we find here that she was a materialistic kind of woman. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. वो उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था वो एक फ्रेंड थी, तो वो इसके स्कूल टाइम से जानती थी. she did not like to visit her. वो उसके घर नहीं जाना चाहती थी. क्यों नहीं जाना चाहती थी? She suffered so much when she returned. She wept for the whole day from the despair and disappointment.
जब भी वो कभी कभार उसके घर जाती थी तो वापस आने पे शी वाज डिस्ट्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटमेंट. डिस्ट्रेस मीन्स हियर डिसअपियर मीन्स डिस्पेयर मीन्स डिस्ट्रेस. डिस्पेयर मीन्स डिस्ट्रेस एंड डिसअपॉइंट मीन्स अपसेट. वो मायूस रहती थी, वो जिंदगी से वो निराश होती थी. हियर ही सेड one evening her husband returned elated bearings in his hand a large envelope. Here he said, here is something for you. एक शाम उसके शवहर ने उसके लिए एक बड़ा लिफाफा लाया और कहा, अरे आप देखिए, there is something for you, आपके लिए मैंने कुछ लाया. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. So वहां कुछ जब उसने कार्ड को खोल लिया तो उसने ये वर्ड्स देखे थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज रैम्पफेंडियो आस्क द ओनर ऑफ Monsieur and Madam Lucille's company Monday evening January 18 at the minister's. So it was an invitation card. ये एक invitation card था जो minister of public instruction की तरफ से आया था, उसके लिए एक दावतनामा था. That was happened to be on the evening 18th January. So here we can say there is M and MME. M means here Monsieur. Monsieur means it is a title for a man in French. And this MME, it is madam for the woman, for the title of a woman. So instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, what do you suppose I want with this? तो instead of being delighted, उसके शवहर ने ये होप किया था, ये उम्मीद लगाई थी कि वो खुश हो जाएगी, लेकिन उसने उस इन्विटेशन कार्ड को गुस्से में ऐसे वहां नीचे टेबल पे फेंक दिया. एंड सेड इन अ स्लो वॉइस, मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दिस? आप इससे क्या चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं इसको? बट माय डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. You never go out and this is an occasion and a fine one. लेकिन मेरी प्यारी, आपको क्या है, आप कभी बाहर नहीं जाती. आई थॉट ये आपके लिए एक चांस बनता है कि आप बाहर जाएंगे. Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. You will be there. ये मौके दूसरों लोगों को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको ये चांस मिल गया तो आपको वहां बहुत से लोग देखेंगे. There will be a grand function at the minister's house. She looked at him with an irritated eye. तो उसने उसको बहुत ही गुस्से में देखा. Irritated means, here's the word irritated means angered. Irritated means angered. तो गुस्से में उसकी तरफ उसने देखा. And declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या उस दिन पहनूंगा, मुझे पहनने के लिए कुछ नहीं है. He had not thought of that. He stammered. लेकिन उसके शवहर ने ये नहीं सोचा था. He stammered. Stammered means fumbled. वो रुक गया, वो कुछ हकला गया. Fumbled. Stammered. Stammered means fumbled. Fumbled. You will take down these notes, these words. Why? The dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. क्यों नहीं, आपके पास वो ड्रेस है जो जब हम थिएटर जाते हैं तो आपको वो ड्रेस जो है वही आप पहन लीजिए. तो that seems very happy, very pretty to me. वो मुझे बहुत ही खुश करता है. He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. तो वो बहुत ही निराश हो गया, उदास हो गया. He is very shocked. He cannot think clearly. Why? So अपने बीवी को रोते हुए जब उसने देखा कि उसके पास कपड़े नहीं है, he stammered. He again stammered. What is the matter? What is the matter? वो हकलाते हुए कहते हैं, क्या बात है, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? By a violent effort she had controlled her. तो
तो बहुत ही कुछ के बाद उसने अपने आप को संभाल लिया, कंट्रोल किया. Vexation and responded in a calm voice. Vexation means is an angry in an annoyance. Vexation means irritation. This is a synonym for it. Vexation. And and respond means answered, reply in a calm voice. और खामोश हुई वो, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, और अपने गाल को साफ कर रही हैं जो उसके देयर वाज द टीयर्स वर रोलिंग ऑन हर चीक्स. नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्स्टेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर. नहीं, कोई बात नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं उस फंक्शन में नहीं जा पाऊंगी. गिव यूर कार टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई. तो आप ये कार्ड जो है, ये जो दावतनामा है, आप ये दूसरे आदमी को दीजिए जिनके बीवियों के पास ये ज्वेलरी होगी एंड दे वुड फिट देयर. वो मुझसे ज्यादा सजेंगे. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड. उसका जो शवर है वो क्या हो गया, ही फील डिस्ट्रेस्ड, लेकिन जवाब दिया. लेट अस सी Matilda. Matilda आप देखिए, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कास्ट. आप देखिए, चलो ठीक है, आपके जो ड्रेस है उसमें कितना खर्चा आएगा. समथिंग दैट वुड सो फॉर अदर ओकेजन्स एंड समथिंग वेरी सिंपल. लेकिन बहुत ही सिंपल होगा, और जब हमारे पास बाकी फंक्शंस होंगे तो उनमें भी हम आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it as an immediate refusal and a frightened explanation from the economical clerk. तो उसने कुछ सोच लिया, कुछ सेकंडों के लिए, और वो ये सोचती है that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical. तो अपने एक economical here means low budgeted. How she can claim the amount of the suit from a low budgeted person. Economical is the word economical. Economical means low budget. Low budgeted person. Finally she said in a hesitating voice. Now she said, उसने थोड़ा कुछ घबराते और हकलाते हुए कहा, I cannot tell exactly. मैं exact नहीं बता सकती हूँ, but it seemed to me that 400 francs or to cover it. इसके लिए तकरीबन 400 francs. What is a franc? Franc is a currency in French, just like we have here rupee. He turned a little pale. He turned colorless. Her husband turned colorless, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties in the next summer with some friends who went to the shoot larks on Sunday. वो पेल क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने लिए कुछ पैसे बचा के रखे थे ताकि वो एक बंदूक ला सके, क्योंकि वो अगले संडे पे उसने अपने दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम बनाया था जब वो शूटिंग के लिए जाएंगे. तो दे आर शूटिंग द lark is a bird on Sunday. Nevertheless he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty ड्रेस. तो अब इसने वो प्रोग्राम भी कैंसिल किया और उसके जो पैसे हैं वो मैटिल्डा को दिए और कहा, ठीक है, आई विल गिव यू 400. चलो ठीक है, मैं आपको 400 ये फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन आप लाना क्या, एक खूबसूरत ड्रेस लाना वहां से. एंड एज शी रेस्पॉन्डेड द बॉल ऑफ द डे अप्रोच्ड एंड मैडम लूजली सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड एंग्शियस. तो जैसे जैसे ये बाल मीन्स इस फंक्शन का जो डेट नजदीक आता जा रहा है, मैडम लूजिल फील इज वेरी डिस्ट्रेस्ड. वो परेशान होती जा रही है, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस. नेवरदलेस हिज ड्रेस वाज नियरली रेडी. नाउ अब उसने जो कपड़े, ये जो सूट बनवाया था, हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग. तो एक शाम उसने कहा, उससे पूछा, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. तो आपको क्या हो गया है? आप कुछ दिनों से आप कुछ उदासी लग रही हो. You acted strangely, and she responded. और उसने जवाब दिया,
I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे पास कोई जिवल नहीं है। घर से मेरे पास कपड़े हैं लेकिन मेरे पास कोई जिवल नहीं है, कोई जेवर नहीं है by which I can adorn myself. Adorn here to decorate. Adorn, A-D-O-R-N-D, decorate. मेरे पास jewels नहीं है so that I can decorate myself. I shall have such a poor stricken look and I will be look very poor there. Poverty stricken look means poor. I would prefer not to go to the party. Now he is going to change his plan, change her plan that मैं इस function में नहीं जाऊंगी. He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. तो उसके शवहर ने जवाब दिया, क्या आप ऐसा कीजिए, you can wear the natural some natural flowers. आप ये जो कुदरती फूल हैं आप वही पहन लीजिए, इस मौसम में वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. चिक मीन्स फैशनेबल, CHIC, चिक, फैशनेबल. She was not convinced, but she was not satisfied. Convinced means satisfied. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of the rich woman. No, ऐसा नहीं है. It is there is nothing more humiliating. इससे कोई what is the humiliating mean here means insulting. Humiliating means insulting. तो इससे कोई बेइज्जती नहीं होगी क्योंकि वहां there will be the woman is from the rich homes. So उनके दरमियान मेरा कुछ ये मेरे लिए ये इंसल्ट होगी, ये बेइज्जती होगी. Then her husband cried out. तो इसी असना में उसके इस शवहर ने चिल्लाया. क्या क्यों चिल्लाया? How stupid we are. Go and find your friend, this friend, Madam Forrester, and ask her to lend you her jewels. तो कितने हम कितने सिंपल हैं, हम कितने सादे हैं. How stupid we are. Go and find your friend, this friend, Madam Forrester, and ask her to. तो आप क्यों अपने दोस्त के पास क्यों नहीं जाते हैं जो आपकी स्कूल मेट है, तो आपसे इसको आप इससे कुछ जेवर आप इससे उधार ले लीजिए, तो आप ताकि आप अपने इस ये जो पार्टी है आप वहां जा सकेंगे. She uttered a cry of joy. तो उसने खुशी से चिल्लाया. It is true. हाँ ये सही है. She said, I had nothing thought of. मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. तो दूसरे दिन वो अपने इस दोस्त के घर जाती हैं and she is narrating the story of distress, the story of pain. जो उसको अपनी वो परेशानी है वो अपना वो दुखड़ा सुनाती है, अपना हाल सुनाती है. Madam Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. Then तो उसने उसके सामने वो jewel का एक बॉक्स होता है, closet, that means a cupboard for jewels. तो उसके सामने रख लिया और कहा, she opened it and asked her, choose my dear. हाँ आप ले लीजिए, इससे क्या लेना है. She saw at first some bracelets. पहले उसने वहाँ कुछ ब्रेसलेट देखे. Then a collar of pearls. Then वहाँ कुछ pearls देखे. And then a Venetian cross of gold and jewels and admirable workmanship. Venetian means from the Venice style. Venice the style. And admirable workmanship. जो बहुत ही अच्छे कारीगरों ने वहां बनाए थे, उसने वहां वो देखे. She tried the jewels before the glass. Now she is trying she is going before the glass. She is looking, hesitating, but could not neither decide to take them or leave them. जब उसने वो पहन लिए, अब वो नए फैसला कर सकती हैं कि मैं इनको ले जाऊं या छोड़ूं. Then she asked, have you nothing more? फिर उससे पूछा, क्या आपके पास और कुछ jewels हैं? Why yes, look for yourself. I don't know what will please you. हाँ क्यों नहीं, मेरे पास है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप किस चीज से आपको कौन सा चीज खुश करेगा, आप किस से खुश हो जाओगे. Suddenly she discovered
in a black satin box a superb necklace of diamond. तो उसकी नजर फौरन एक डायमंड पे पड़ गई जो बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था. Her hand trembled and she was very shaking as she took it out. जैसे उसने उस बॉक्स से निकाला तो she was trembling, वो थर थर आई थी. Because of her poverty she placed it about her throat against her dress. तो उसने अपने ड्रेस के साथ ये मैच किया and was ecstatic, और बहुत ही खुश हो गई. Ecstatic means ecstatic, joyful. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? तब उसने घबराते हुए उससे पूछा कि आप इसको मुझे दे सकती हैं? Why, yes, certainly, हाँ क्यों नहीं, जरूर. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. तब उसने उसके वो गले लगाया और वो नेकलेस लेके बाहर आई, और with the treasure, that was a precious thing for her. So here the word treasure has been used. Now the day of the ball arrived. Memphis was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All of them noticed her, asked her name, and wanted to be present there. Now, when the time of the ball arrived, when the day of the party arrived, Madame Luz was a great success there because she was fully dressed. She was in a beautiful dress. She was the prettiest of all, the elegant, gracious. All the elegant, gracious, smiling, and full of joy. She was their very success because she has the dress, she has all the things, the dress, the jewels, and all men noticed it up. सभी आदमी उसकी तरफ देख रहे हैं. आज का डैन उसे नाम पूछा जा रहा है, wanted to be present, और उसको ये कहा जा रहा है कि आप प्रेजेंट हो जाओ, आप यहाँ परफॉर्मेंस दीजिएगा, आप यहाँ डांस कीजिएगा, आप पार्टी में आए. तो इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि सो दिस इज एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल हम ये वी विल कंटिन्यू दिस with the second class. So till then you will take down these notes and will prepare in your notebook. Thanks.